Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with today's GFG period 3 question. Today's question name is decimal equivalent of binary linked playlist. It's an easy question, you can say, but let us see how many approaches or how many ways are to solve this question. हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट दे रखा है लेंथ एंड द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी नंबर दैट इज कंटेन्स ओनली 0 and 1. वी नीड टू फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट. ठीक है, तो अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है, वी वांट टू फाइंड डेसिमल बाइनरी नंबर एंड वी वांट टू फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट. दैट इज सिंपल. ओनली थिंग दैट इट हैज़ बीन गिवन टू इट इन अ लिंक लिस्ट. सिग्निफिकेंस, ओके, ये तो नॉर्मल सी बातें लिख रखी हैं कि अब अगर राइट से लेफ्ट जाते हो तो सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली डिक्रीज होता है. आप लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ ट्रैवर्स कर जाते हो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज लेफ्ट में जो लेफ्ट मोस्ट जो बिट्स होता है उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, एंड द वेट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बिट्स इट हैज़ टू इट्स राइट हैंड साइड. ठीक है, सो फॉर n equals to 3 0 1 1 clearly you can see the conversion is 0 into 2 power 2 1 into 2 power 1 and 1 into 2 power 0, and that's the answer 3. तो इसको करने के क्या तरीके हो सकते हैं यार, हमें बस पता कर लगाना है कि what we need to know to convert a binary into a decimal system. So let's say we have 0 1 and 1. तो मेरे को पता है इसकी weight is 2 power 2 और ये 2 कहाँ से आ रहा है, the number of bits present in the right hand side of it. Similarly इसकी 2 power 1 है because we have 1 bit present to the right hand side. Similarly 2 power 0 इसकी है, right? अगर आपके पास कोई और नंबर है, let's say 1 1 1 1, तो यहाँ पे 2 power 0 वेट होता है, 2 power 1 2 power 2 and 2 power 3. बट क्योंकि ये लिंक लिस्ट दे रखा है, राइट, अगर ये आ रहे होता तो डेफिनेटली हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू कर देते हैं पीछे की तरफ और एक काउंटर मेंटेन कर लेते हैं, 0 1 2 3 चला जाता, राइट. बट हमारे पास लिंक लिस्ट दे रखा है तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि हम सिर्फ फ्रंट से ही ट्रैवर्सल शुरू करें, राइट. तो हम फ्रंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ही ट्रैवर्सल शुरू कर सकते हैं. तो बट हमें ये नंबर तो चाहिए इसका वेटेज निकालने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मेथड 1 में हम क्या कर सकते हैं कि वी फाइंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट. लेट मी राइट इट फॉर यू. पहला हम ये कर सकते हैं, फाइंड द लेंथ कर ले और उस लेंथ का यूज़ करें to decide the weightage of the binary numbers. So for this case 0 1 and 1, we will run a for loop, right. We will run an explicit for loop taking O of n and finding the length. So length would be 3, right. Now I know the weightage here is 2 and similarly the weightage here is 1 and 0, correct. तो मैं इस 3 का इस्तेमाल कर लूँगा. Let's say this is count, so I will do a count minus 1 first of all, and then we will just use this count here and then similarly keep on decreasing the count as count minus minus, right. So this would be our first approach. That's the code here. Okay, so that's the code here. We have made a count variable and then we have made an answer variable as well. इन्होंने बोला है कि आपको overflow भी handle करना है, तो हमने long mod 10 power 9 plus 7 ले रखा है. Now we are using a for loop to get the count of the linked list, right? For this list 0 1 and 1, the count would be here as 3. Now we are again traversing using a for loop and we are getting the count or getting this weight, right? And what is this left shift operator? So if I'm saying that 1 left shift 2, if I'm saying that, then I'm simplifying that it is nothing but 1 into 2 star 2, right. ये 1 यहाँ से आता है, ये जो 2 है यहाँ चला जाता है, and then this 2 is stays here as it is by the formula. तो वही हमने यहाँ पे left shift कर दिया and we are decreasing the count and that is it, return answer. But if you see the time complexity, it would be strictly O2 of n, that is we are doing a traversal 2 times and O of 1 as time complexity. Can we do this in O of n, strictly O of n? Either way the worst complexity will remain same. You can also say this as O of n, but then again can we do this in just one traversal? Sometimes it may be asked, and since we are doing this question, so let us see how we can do in O of n as well. ठीक है, एक छोटा सा ड्राई रन समझते हैं यार. हमारे पास लेट्स से नंबर्स दे रखे हैं, 1 सेकेंड. हमारे पास लेट्स से नंबर्स दे रखे हैं 1 1 or let's say 0 1 and 1, right, and then we'll dry run for 1 1 1 and 1, right. So what I'm saying is that I'm declaring an answer 0, right, and what I'm saying is that answer is nothing but answer star 2 plus current dot data, right. Instead of deciding the weight, I am going from left hand side to right hand side और हम इसका वेट बढ़ाते चलेंगे यार, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, अगर आगे कोई एक 1 आता है तो डेफिनेटली इसका वेट बढ़ जाएगा. एक बार देखते हैं ड्राई रन क्या बोलता है. तो मैं इस पॉइंट के लिए क्या करूँगा, मैं बोलूँगा आंसर स्टार 0 should be 0 star 2 plus 0 and you will get a 0. Again for this case you will pick up this previous answer and you will say 0 star 2 plus 1 and you will get a 1 here, and you can clearly see the decimal equivalent of 0 1 would be 1. Similarly at this point
You will take your previous answer was 1, so I will say 1 star 2 plus my current data, which is nothing but 3, and you can clearly see that the decimal equivalent of 0, 1 and 1 is nothing but 3. Similarly, for 1, 1, 1 and 1, you will have an answer. So for this thing, I would just say previously our answer would be 0, right, initially. So 0 star 2 plus 1 will give you 1. Then again, for this case, you will take the previous answer, that is 1. 1 star 2 plus 1 will give you 3. Similarly, for the next one, you will do 1. The previous answer, that is 3 star 2 plus 1, which will give you what? 7. And you can clearly see the decimal equivalent of 1 on 1 is 7. Similarly, for the last one, that is equal to last iteration, it would be 7 star 2 plus current data, that is 15, and you will get your answer. ये लॉजिक काम कैसे कर रहा है आप खुद सोचो. हमें जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ऐसे समझाता हूँ. जब मैं इस पॉइंट पर हूँ, राइट, जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं इन सब में एक वेटेज ऑफ 2 ऐड होगा, राइट. एक 2 इसकी वजह से यहाँ भी ऐड होगा, एक 2 यहाँ भी ऐड होगा, करेक्ट. सिमिलरली जब मैं इस पॉइंटर पे हूँ तो इस 1 के लिए एक वेटेज ऑफ 2 यहाँ से ऐड होना चाहिए, करेक्ट. तो ये इसका इंट्यूशन है यार. जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 2 बढ़ाते जा रहे हैं अपने पूरे प्रीवियस आंसर में. एंड दैट्स द कोड हियर. वी आर डूइंग अ फॉर लूप आल्सो जस्ट वंस एंड वी आर स्टोरिंग द आंसर इन आंसर स्टार 2. अब ये एसोसिएटिव रूल है यार. अगर आप ए स्टार बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a%m स्टार b%m whole का %m, right? But this is only valid for plus, minus and multiplication, I guess. For division it is not valid, right? ठीक है यार. तो please pause this video here, try to code this approach by yourself and then we can see. So that's the method 1. I'll just comment it. That's the method 2. We'll hit the submit button. And what would be again the time and space? The time would be again O of n, strictly O of 1 traversal, and O of n as your time and O of 1 as your space. Okay, great. तो ये क्वेश्चन इजी था यार. हमने कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया इसको, बट ठीक है. लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार. एंड लेट अस मीट अगेन.